ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you to our Ekadasi class. Yes, Kushal Bihari Prabhu, where are you? Kushal Bihari Prabhu. Okay, where is Kushal Bihari Prabhu? Oh, he is there, he is not able to speak. Where are you? You are not visible. Anyone knows where is Kushal Bihari Prabhu? Yes, Kushal Bihari Prabhu. Hare Krishna. Where are you? Your video is not on. Video is on, Prabhuji. Okay, I'm not able to see you. Okay, yes, please. So where you were? I was here only. I was unable to unmute. Oh, okay. Hare Krishna. So we welcome heartily Kushal Bihari Prabhu to our class. Thank you. So we were discussing about Brihad Bhagavatam and for long time we didn't had our Ekadasi class. तो हम लोग बृहद भागवतामृत पर चर्चा कर रहे थे और बहुत लंबे समय से हमारी एकादशी कक्षा नहीं हो रही थी। And now I remembered about Brihad Bhagavatam and before Janmashtami we will try to complete hearing Brihad Bhagavatam. तो मुझे याद आ गया है बृहद भागवतामृत के बारे में। तो जन्माष्टमी से पहले हम अपने बृहद भागवतामृत को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। We were discussing how Sri Narada Muni was in search of the topmost devotee of Krishna. तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री नारद मुनि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त की तलाश में थे। Those who are not devotees, they think themselves as the greatest devotees. और जो भक्त नहीं होते हैं वो स्वयं को बहुत महान भक्त समझते हैं। But those who are devotees, Brihad Bhagavatamrita in the first volume explains what is the nature of devotees. और बृहद भागवतामृत अपने पहले अध्याय में बताती है कि वास्तविक भक्तों का उनकी क्या चेतना होती है। Those who are devotees, they never consider that they are great devotees. और जो वास्तव में भक्त होते हैं वो स्वयं को कभी भक्त नहीं समझते हैं। They think they're the most fallen souls. और वो सोचते हैं कि हम सबसे पतित आत्माएं हैं। And it's not that they tell to others and they think they're fallen souls so that others will consider them as great devotees. और ऐसा नहीं है कि वो ये दूसरों को बताने के लिए करते हैं ताकि दूसरे लोग उनको बहुत महान भक्त समझें। It's not that they are using humility to show themselves how great they are. और वो अपनी विनम्रता का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत
बहुत महान दिखा सकें दूसरों के सामने स्वयं। They are fully convinced that they are fallen souls. और उनको पूर्णतः विश्वास है कि वो पतित आत्माएं हैं। So we saw how Narad Muni, he went to a Brahmana in Prayag, and the Brahmana said, I am not a great devotee, and the Brahmana sent him to a king. तो हमने देखा कि श्री नारद मुनि प्रयाग में एक ब्राह्मण के पास गए और उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं कोई महान भक्त नहीं हूँ, और उन्होंने उनको एक राजा के पास भेज दिया. And the king in the South India, he said that I am doing no service to Krishna. Actually, real service is done by the king of the demigods, Indra. और दक्षिण भारत के उस राजा ने नारद मुनि को बोला कि मैं भगवान के लिए कुछ भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक सेवा तो देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं. And Indra said, I have done so many offenses. Do you consider me as a devotee? Narad Muni, have you lost your sense? और इंद्र ने कहा कि मैंने तो इतने अपराध किए हैं, आप मुझे एक भक्त समझते हैं? क्या हो गया है? क्या Will a devotee go to someone else's wife like Ahalya and do whatever I did? तो क्या एक भक्त कभी ऐसा करेगा कि किसी और की पत्नी के पास जाके जैसा मैंने अहिल्या के साथ किया? Will a devotee kill other devotees like I did in Govardhan Leela? और गोवर्धन लीला के समय कभी ऐसा कोशिश करेगा कि भक्तों की मारने का प्रयास करे? Will a devotee become envious of other devotee like I did with Pruthu? तो कभी भक्त क्या दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करेगा जैसा मैंने पृथु के साथ किया? And will a devotee kill another devotee like I killed Vritrasur, who was a great devotee? और क्या एक भक्त कभी दूसरे भक्त की हत्या करेगा जैसे मैंने वृत्रासुर की हत्या की? I am not a devotee, Narada. You go to your father Brahma, who is the topmost of devotee. तो मैं कोई भक्त नहीं हूँ नारद मुनि, आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए जो कि सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं. Indra would have done one mistake in lakhs and lakhs of years. He would have done one mistake, but he considers that mistake as the greatest mistake, and he remembers that mistake. तो उन्होंने लाखों लाखों सालों में एक गलती की होगी और उस एक गलती को ही वो हमेशा याद रखते हैं. For us, in lakhs and millions and billions of years, we may have done one good thing to someone, but we remember that good thing and we forget all the horrible things that we have done. और हम क्या करते हैं, लाखों लाखों सालों में कोई एक अच्छा काम करते हैं दूसरे के प्रति और उसको हमेशा याद रखते हैं. In the entire life, we may have done one favor to someone, but we'll remember that favor. But we may have troubled that person so much, but we will forget all those. और हम लाखों लाखों सालों में किसी एक व्यक्ति का कुछ भला कर देंगे तो उसको हमेशा याद रखेंगे, और जो हमने उसके साथ बुरा किया है वो सब भूल जाते हैं. So we should understand a devotee is one who never remembers what favor he did to others. तो हमें समझना चाहिए कि एक भक्त वो होता है जो दूसरों की कुछ सहायता करके उसको याद नहीं रखता. But he remembers whatever mistakes, whatever wrong things he has done to others. लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि उसने क्या-क्या गलतियां की हैं जीवन में. So in this way, Narad Muni went to Brahma, and Brahma said, I am not a devotee. I have done so many mistakes. I only requested Krishna to come down, and I only troubled him by stealing away his friends and calves. और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने ही प्रार्थना करके भगवान को नीचे बुलाया और उसके बाद मैंने ही उनको परेशान किया, उनकी सारी गौएं, उनके बछड़े और मित्रों को चुरा लिया. And so many times I have got affected by illusion. और कितनी बार मैं मोहग्रस्त हो गया. Go to Shiva. He is the greatest of all Vaishnava. All the scriptures tell that Vaishnava Naam Yatha Sambhu. Just like among all the rivers, Ganga is supreme. Similarly, among all devotees, Lord Shiva is supreme. तो आप भगवान शंकर के शिव जी के पास जाइए, उनको वैष्णव नाम यथा शंभु कहा जाता है. जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है, उसी प्रकार भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त शिव है. And Narad Muni pays obeisances to Brahma and goes to Shiva Loka, which is actually beyond the covering of this material universe. तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नारद मुनि शिव लोक गए, जो कि ब्रह्मांड की सीमाओं
के पास है। And Narad Muni was jumping and telling, Jai Jai Mahadev, Har Har Mahadev, and I have now found out the greatest devotee of Krishna, who is not different than Krishna. और नारद मुनि जोर जोर से कूद रहे थे और बोल रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मैं भगवान के सबसे बड़े भक्त के सामने आ गया हूँ, जो कि भगवान से अभिन्न है। And as soon as Lord Shiva heard Narad Muni speaking that he is not different to Krishna, he jumped up and closed Narad Muni's mouth and embraced him. और जैसे ही भगवान शिव ने सुना कि नारद मुनि उनको भगवान से अभिन्न बता रहे हैं, तुरंत वो कूद के नीचे आए और उन्होंने नारद मुनि का मुंह बंद कर दिया। And Lord Shiva said, my dear brother, because Lord Shiva is also son of Brahma and Narada is son of Brahma, so both are brothers. So Lord Shiva said, my dear brother Narada, what nonsense you are speaking. Are you not doing your sadhana properly? How you are getting bewildered? तो शिव जी ने कहा कि मेरे भाई नारद, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया है आपको, आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप अपनी साधना ठीक से नहीं कर रहे हैं? Are you not understanding that Supreme Lord is Supreme Lord and no one can become Supreme Lord? I am not even his devotee. I consider myself as devotees of his devotees and most insignificant of the devotees. और शिव जी ने कहा कि मैं तो कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो भगवान के दासों का भक्त हूँ और भगवान के भक्तों का भक्त हूँ और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। Will any devotee support a demon like Banasur? तो क्या कोई भक्त कभी बाणासुर जैसे राक्षस की सहायता करेगा? Banasur was so much against the sages and all. Will any devotee give benedictions to such a demon like Ravana? बाणासुर ऋषियों को कितना परेशान करता था, और क्या कोई भक्त रावण जैसे राक्षस को वरदान देगा? Will any devotee accept worship from the Supreme Lord? क्या कोई भक्त कभी भगवान से पूजा स्वीकार करेगा? I am so ridiculously foolish that I am accepting worship from the Lord. और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं भगवान से भी पूजा स्वीकार कर रहा हूँ। How can such an arrogant person be considered as the greatest of devotees? कोई इतना ढीठ व्यक्ति कभी भगवान का भक्त माना जा सकता है? And I, as a Brahmana, appeared in Kali Yuga and I preached the philosophy which takes away people from devotional service. और मैं कलयुग में ऐसे व्यक्ति के रूप में आया, एक ब्राह्मण के रूप में, जिसने वो दर्शन बताया जो भगवान से दूर लेके जाता है। I ensured that whoever reads my Saririka Bhasya, he will completely get devoid of devotional service. Is this work of a devotee? और मैंने ऐसा कार्य किया कि जो भी मेरे शारीरिक भाष्य को पढ़ेगा वो भक्ति से पूरी तरह दूर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई एक भक्त कर सकता है? So Lord Shiva is mentioning to Narad Muni about his incarnation as Sankaracharya. तो भगवान शिव नारद मुनि को अपने शंकराचार्य के अवतार के बारे में बता रहे हैं। So do you consider my activities as activities of devotees? Will any devotee make others non-devotees? तो क्या मेरे कार्यों को आप एक भक्त के कार्य के रूप में देखते हैं? क्या कोई भक्त कभी दूसरे लोगों को अभक्त बना सकता है? When I appeared as Sankaracharya, those who took my association, they gave up all their devotional service to Lord and became atheist. और जब मैं शंकराचार्य के रूप में आया तो मेरे अनुयायी जो भी थे उन्होंने पूरी तरह भक्ति को त्याग दिया और वो नास्तिक बन गए। So Narada, I am not a devotee of the Lord.
actual real recipient of Krishna's mercy and the greatest of devotees are in Vaikuntha. तो नारद, मैं भगवान का वास्तविक भक्त नहीं हूँ, भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं वो वैकुंठ लोक में हैं। These devotees who reside in Vaikuntha, they are in constant association of the Lord. और जो भक्त वैकुंठ में निवास करते हैं वो भगवान के नियमित संग में रहते हैं। They have the same bodies that exactly look like the Lord. और उनका शरीर बिल्कुल भगवान के शरीर की तरह ही दिखाई देता है। But they never consider themselves as equal as Lord. लेकिन वो स्वयं को कभी भगवान के बराबर नहीं समझते। You said that I give liberation, but real liberation is given by these greatest devotees of the Lord who reside in Vaikuntha. तो आप कहते हैं कि मैं लोगों को मुक्ति देता हूँ, लेकिन वास्तविक मुक्ति इन महान भक्तों के द्वारा दी जाती है। Just once Ajamila chanted the name of Narayan, these devotees descended from Vaikuntha and saved him. और नाजामिल ने केवल एक बार नारायण का नाम लिया और ये भक्त अब नीचे उतर कर आ गए और उसकी रक्षा की उन्होंने। The entire universe and the entire creation, these devotees roam just to distribute the mercy and compassion of Lord Krishna. तो ये भक्त पूरी सृष्टि में विचरण करते हैं ताकि भगवान की कृपा और करुणा का वितरण साथ। And because they roam around to give the mercy of the Lord, that is how they are the greatest devotees of the Lord. और क्योंकि वो भगवान की कृपा के वितरण के लिए घूमते हैं, इसीलिए वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। And this is very, very essential for all of us to understand that the real devotees of the Lord don't consider themselves as devotees of the Lord, and they are filled with compassion to make others as devotees of the Lord. तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं वो सबसे पहले स्वयं को भक्त नहीं मानते हैं और वो दूसरों को भगवान की कृपा देना चाहते हैं। Lord Shiva said that I came as Sankara and diverted everyone from devotional service, but these great devotees of Vaikuntha, they roam everywhere to make others as devotees. तो भगवान शिव ने कहा कि मैं शंकराचार्य के रूप में आया और मैंने लोगों को नास्तिक बना दिया, लेकिन ये जो भगवान के भक्त हैं वो सब संपूर्ण सृष्टि में विचरण करते हैं और दूसरे लोगों को भक्त बनाते हैं। And what to speak of those devotees who are residing in Vaikuntha? The devotees who are residing in material world, they are so glorious. और वैकुंठ लोक में जो भक्त निवास करते हैं उनकी क्या बात करें? जो भौतिक संसार में भगवान के भक्त निवास करते हैं वो ही बहुत महान है। They roam around in the material world, but they are not at all affected by the material energy. और वो पूरे भौतिक संसार में विचरण करते हैं, लेकिन कभी भी भौतिक संसार की माया से अभिभूत नहीं होते। Wherever they go, it becomes Vaikuntha. जहां भी वो जाते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। And whatever they speak, it becomes a kirtan. जो भी वो बोलते हैं वो कीर्तन बन जाता है। I always aspire to become devotees of such devotees who roam in this material world speaking about Krishna. और मैं हमेशा ऐसे भक्तों के भक्त बनना चाहता हूँ जो पूरे संसार में विचरण करके भगवान के बारे में चर्चा करते। But still, the devotees residing in Vaikuntha are very special because they are in constant touch of our Supreme Lord. लेकिन फिर भी जो भक्त वैकुंठ में निवास करते हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो भगवान के सतत संग में रहते हैं। And as soon as Lord Shiva was glorifying the Vaikuntha Vasis, immediately Parvati started speaking. और जैसे ही भगवान शिव वैकुंठ वासियों के बारे में बता रहे थे, तुरंत ही पार्वती भी बोलने लगी। And she said to Narada, "Oh Narada, of all the Vaikuntha Vasis, the topmost and greatest is my close friend, who is Sri Lakshmi." और पार्वती ने कहा कि सारे वैकुंठ वासियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो मेरी बहुत परम मित्र हैं,
वो है श्री लक्ष्मी जी। In this world, when you hear some glorification, when one lady hears a glorification of another lady, there is a lot of envy involved. इस संसार में हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जब अगर कोई महिला किसी दूसरी महिला की प्रशंसा होते हुए सुनती है तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। I have seen that in my mother and my two sisters. I didn't got opportunity to see in someone else, but I saw it in my mother and sisters. तो मैंने कभी-कभी अपने माता और अपनी बहन के व्यवहार में देखा और किसी का व्यवहार देखने का तो मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। But I saw if and in one devotee's, in one lady's, in her ears, another lady's glorification. Oh, she is so beautiful and she is having this quality, that quality. Okay, I am no less. और जब भी उनके कान में पड़ता है किसी और स्त्री का जो गुणगान है कि वो बहुत सुंदर लगती है, उसके अंदर ये गुण है, तो तुरंत ही उनके मन में आता है मैं भी उससे कोई कम नहीं। But see the spotless character of Parvati. लेकिन आप देखिए बेदाग जो चरित्र है वो पार्वती जी का। When she heard about the glories of all the Vaikuntha-vasis, because Lord Shiva did not specifically point out the unique glories of Mother Lakshmi, she immediately caught Lord Shiva and said, out of all the Vaikuntha-vasis, Mother Lakshmi is very special. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भगवान शिव ने वैकुंठ वासियों का गुणगान किया, लेकिन उन्होंने खास तौर पर लक्ष्मी जी का गुणगान नहीं किया, तो तुरंत पार्वती जी ने उनको पकड़ लिया और कहा सारे वैकुंठ वासियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी जी। And Parvati said, Mother Lakshmi, the whole creation wants her glance. और उन्होंने कहा कि जो माता लक्ष्मी है पूरी सृष्टि को उनकी दृष्टि देखनी चाहिए। Everyone is worshipping her. और प्रत्येक व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा है। Everyone is glorifying her. और हर व्यक्ति उनका गुणगान कर रहा है। Everyone wants her to come to their house. Yes, all of you. What do you think? तो हर व्यक्ति उनको अपने घर में बुलाना चाहता है। सभी लोग बता सकते हैं। Yes, what all of you think? How many of you want Lakshmi? Oh, yes, good. There are a lot of honest people. Yeah, very good. Everyone wants her, but she is simply considering herself as a maid servant of Narayan and always at the lotus feet of Narayan. तो हर व्यक्ति उनको चाहता है, उनको अपने घर में देखना चाहता है, लेकिन वो भगवान की एक सेविका के रूप में उनके पैरों को दबाती है। In this world, we see someone gets some material fame, little bit of fame, he becomes completely intoxicated and so much intoxicated that he forgets everyone, forget about Krishna, he forgets everyone and everything. इस संसार में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा यश प्राप्त हो जाता है तो तुरंत ही वो उसके नशे में इतना चूर हो जाता है कि वो भगवान तो क्या इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भूल जाता है। Here is Mother Lakshmi. No one is famous as her, but my Lakshmi, my friend Mother Lakshmi, she is constantly serving Narayan. She is constantly worshipping Narayan, and she does so much of penances and austerities to serve Narayan. पार्वती ने कहा लेकिन आप लक्ष्मी जी को देखिए कि वो भगवान की निरंतर सेवा कर रही हैं और लेकिन उनके मन में जरा भी अहंकार नहीं है वो। And interesting thing is, Narayan doesn't want Lakshmi. और सबसे विशेष बात ये है कि नारायण लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं। There are entire world who wants Lakshmi. She doesn't want to go to them, and Narayan doesn't want her. She is constantly serving Narayan. That is her glory. तो सारे संसार के लोग लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नारायण स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना नहीं चाहते। लक्ष्मी जी उनके पास रहती हैं, लोगों के पास नहीं जाती। So go, Narada, if you want to meet the greatest devotee of the Lord, go and meet Mother Lakshmi. She is indeed the greatest devotee of Lord. तो नारद
आप जाइए लक्ष्मी जी के पास जाइए, यदि आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त को देखना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी जी से मिलकर आइए। And Narad Muni, as he heard this, he jumped into air and said, Oh Narayan, oh Lakshmi, oh Vaikuntapati, I'm coming to take your darshan. तो नारद मुनि उछलने लगे, कूदने लगे और बोलने लगे, वो नारायण, वो लक्ष्मी, मैं आ रहा हूँ आपके दर्शन प्राप्त करने। Immediately Lord Shiva pacified Narada and took him little aside. और तुरंत ही भगवान शिव ने उनको शांत किया और उनको एक किनारे ले गए। Taking Narada to little aside, away from Mother Parvati, Lord Shiva said, I will tell you some secret, O Narada. और थोड़ा सा पार्वती माता से दूर ले जाकर उन्होंने कहा कि नारद, मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात बताता हूँ। Sometimes it happens with men members and husbands, and they want to keep something secret to their wives. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं वो कुछ चीजें अपनी पत्नी से दूर रखना चाहते हैं। I don't recommend that, but since Narad Muni was celibate and it was all okay. तो मैं उसकी अनुशंसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि भगवान शिव नारद मुनि को बता रहे थे तो उसमें कोई समस्या नहीं। I don't think you did the right translation. Narad Muni is celibate, renounced, and sannyasi, and that's why it is okay. क्योंकि नारद मुनि एक ब्रह्मचारी है, एक सन्यासी है, इसलिए ये कोई समस्या नहीं। So Lord Shiva took Narada to the side and said, Oh Narada, I will tell you a secret, but I don't want to tell it in front of my wife Parvati. शिव जी ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के सामने नहीं बताना चाहता। See, even Lord Shiva fears his wife. भगवान शिव तक अपनी पत्नी से डरते हैं। And if someone is not fearing his wife, then he will get wrath of Lord Shiva. और यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से नहीं डरता है तो उसको because he is competing to go above Lord Shiva. क्योंकि वो भगवान शिव से भी ऊपर जाने की कोशिश Lord Shiva is fearful of his wife Parvati. भगवान शिव अपनी पत्नी से भय खाते हैं। And these husbands of this world, they think they are not afraid of their wife. और इस संसार के छोटे-मोटे पति सोचते हैं कि अपनी पत्नी से डरने की कोई जरूरत नहीं। So Lord Shiva said, I want to keep peace at home. भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने घर में शांति रखना चाहता हूँ। And he took Narada and said, Narada, I will tell you there is someone who is even greater than Lakshmi. और उन्होंने कहा कि नारद, मैं बताता हूँ कि कोई है जो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है। And because my wife Parvati has said about her close friend, that's why I don't want to disclose, and otherwise she will become angry. क्योंकि मेरी पत्नी ने अपने परम मित्र के बारे में बोला, इसलिए मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं बता। Just consider this story. Our Lord appeared as Narsingadev. तो केवल ये कहानी सुनिए कि हमारे भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए। And when he appeared as Narsingadev, his own wife Lakshmi, she could not recognize him, and she was fearful of approaching Narsingadev. तो जब इस प्रकार इस रूप में प्रकट हुए तो उनकी पत्नी लक्ष्मी वही उनको नहीं पहचान पाई। And just consider this devotion of this 5-year-old boy Prahlad. और आप इस 5 साल के छोटे बच्चे की भक्ति के बारे में सोचिए। Mother Lakshmi was afraid to go near Lord Narsingadev, but Prahlad, he was fearless. He saw Lord Narsingadev as his Lord himself. तो जो माता लक्ष्मी थी, वो नरसिंहदेव के सामने जाने में उनको भय लग रहा था, लेकिन इस 5 साल के बालक को कोई भय नहीं लगा, वो निडर था और वो भगवान को उनको नरसिंहदेव को अपने भगवान के रूप में ही देख रहा था। And Lord picked up Prahlad and put him on his lap and started licking him. And Lord gave so much of favors to Prahlad. Lord himself declared that if you considered all the devotees, all my devotees, Prahlad is the best of my devotees.
और नरसिंह देव ने स्वयं प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और प्रेम से उनको चाट रहे थे और उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि मेरे सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद है. And wherever there is discussion about the glories of devotees, if in that discussion Prahlad is not glorified, then that discussion is incomplete. और जहां पर भी मेरे भक्तों के गुणगान के बारे में चर्चा हो रही है, उस स्थान पर यदि प्रहलाद की चर्चा नहीं होती है तो वह चर्चा व्यर्थ है, अपूर्ण है. And constantly Prahlad was remembering about Krishna. और प्रहलाद निरंतर भगवान कृष्ण के बारे में ही स्मरण करते थे. And you said that Lord loves me, and Lord heard my prayers and that's why he protected Bana. Lord didn't protect Bana because he heard my prayers. Lord actually favored Prahlad because Banasur appeared in the family of Prahlad. तो आप कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने बाणासुर को माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बाणासुर प्रहलाद के परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उनको कृपा मिली. Just see, Lord Vamandev is constantly at the door of Prahlad's kingdom, Sutaloka. तो आप ये देखिए कि वामन देव प्रहलाद का जो लोक है, सुतल लोक, उसके द्वार पर खड़े हुए हैं. Oh Narada, go immediately to Sutaloka and meet Prahlad. He is the greatest devotee of Lord Vishnu. ओ नारद, आप तुरंत ही सुतल लोक जाइए और वहां पर प्रहलाद महाराज से मिलिए, क्योंकि वही भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं. And Narad Muni said, Jai Prahlad, and he went to Sutaloka. और नारद मुनि ने कहा जय प्रहलाद, और वो सुतल लोक चले गए. And Lord Shiva said, Narada, wait a minute. If you behaved the way you behaved with me, telling that I am not different than Krishna and you respected me, you paid obeisances to me, if you do that with Prahlad, he will become so angry that he will not talk with you. और उन्होंने भगवान शिव ने नारद मुनि से ये कहा जाते समय कि ध्यान रखना, जिस प्रकार से तुमने मेरे सामने कहा कि मैं भगवान से अभिन्न हूँ, ऐसा अगर तुमने प्रहलाद महाराज के सामने कहा तो निश्चित रूप से वो बहुत नाराज हो जाएंगे और तुमसे कुछ भी बात नहीं करेंगे. That's why don't behave respectfully with him. Just go and see and witness his devotion by your own eyes. तो आप उनको आदर मत दीजिए और आप वहां जाकर उनसे मिलिए और अपनी आंखों से देखिए. And then this is Narad Muni going to Sutaloka and he started chanting the names of Prahlad, and Prahlad was so happy meeting Narad Muni because Narad Muni is spiritual master of Prahlad, and he paid obeisances to Narad Muni. He made him sit down and he started glorifying Narada. और जैसे ही प्रहलाद महाराज से मिले तो प्रहलाद महाराज उनको दंडवत किए क्योंकि वो उनके गुरु हैं, और उन्हें बिठाया और उनसे बातें करने लगे. And Narad Muni said, "Oh Prahlad, you are the topmost of Lord's devotees." नारद मुनि ने कहा कि प्रहलाद, आप भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं. You are so great that Lord is constantly at your doorstep as Vamandev. और आप इतने महान हैं कि भगवान स्वयं आपके द्वारपाल के रूप में, वामनदेव के रूप में खड़े हुए. You are so great that Lord himself asked you for some benediction and you said you don't need any material benediction. You just want to serve the Lord with purity. और आप इतने महान हैं कि जब भगवान ने आपसे वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने उनसे कुछ भी नहीं मांगा. और as soon as Prahlad heard this, his glorification, he closed his ears and said, Vishnu, 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 I am not even a devotee. Forget about being the greatest devotee. और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने ये सुना, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और कहने लगे विष्णु विष्णु विष्णु. उन्होंने कहा कि मैं कोई भक्त ही नहीं हूँ. Narada, have you not read Bhagavad Gita? नारद मुनि, आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है क्या?
My dear spiritual master, in Bhagavad Gita, Lord himself has said that those who worship him when they are distressed, they are not devotees, they are beginners. Sukritino. तो गुरुदेव आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि भगवान कहते हैं कि जो भगवान को जो परेशानी के समय याद करते हैं वो बहुत ही प्रारंभिक भक्त होते हैं. Artho Artharthi Jigyasu. I am like Artho. Whenever I was in distress, I called out, oh Lord, protect me, protect me, protect me. तो भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु, अर्थात कि तो मैं वो आर्तो की श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि जब जब मुझे मेरी जान को खतरा हुआ तो मैंने भगवान का नाम लिया, मुझे बचाइए बचाइए. And the Lord always came and protected me because he is merciful. He didn't protect me because he wants to protect me because I am a great devotee. Because he is merciful. It is his nature. तो भगवान ने मेरी रक्षा की इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत महान भक्त हूँ, इसलिए क्योंकि वो स्वयं बहुत. He protects everyone. And he didn't appear as Narsimhadev to protect me. He appeared to protect the demigods. He appeared because your father Brahma, he gave a benediction and he appeared for that. और वो मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, वो देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट हुए, क्योंकि आपके पिता ब्रह्मा जी ने एक वरदान दे दिया था, तो वो उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए. Oh Narada, I am so foolish that I could not even recognize my Lord when I went to Badrikashram. और नारद मुनि, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं जब बद्रिकाश्रम गया तो मैं अपने भगवान को नहीं पहचान पाया. So this story comes in many of the Puranas, like the Vaman Purana and all other Puranas, where Prahlad Maharaj once decided to go to Badrika Ashram to pay a visit to Narayana Rishi. तो ये जो कहानी है वो वराह पुराण आदि पुराणों में आती है कि एक बार प्रहलाद महाराज नर नारायण ऋषि जो भगवान का स्वरूप है उसके दर्शन करने के लिए. So when Prahlad was going to Badrika Ashram through Lucknow and Naimisharanya, तो जब प्रहलाद महाराज लखनऊ नैमिषारण्य के रास्ते से बद्रिकाश्रम जा रहे थे, so there he saw, Prahlad Maharaj saw a sannyasi who was dressed in sannyasi but holding bow and arrow like a kshatriya. तो वहां पर मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि सन्यासी वेश में थे, लेकिन उनके हाथ में तीर और धनुष और बाण थे. Prahlad, as a king, he said, oh dear man, either you become a monk or you become a kshatriya. This is wrong. और प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो कि स्वयं राजा हैं कि उन्होंने कहा या तो आप स्वयं ब्रह्मचारी बनिए या फिर आप क्षत्रिय बनिए. You can't be a brahmachari and keep a bank account. आप ब्रह्मचारी बनके अपना बैंक अकाउंट नहीं रख सकते. That was Prahlad Maharaj versions for all the Kali Yuga people. तो ये जो है प्रहलाद महाराज का कलयुग के ब्रह्मचारियों के लिए कहा है. At once give up your bow and arrow if you want to be a sannyasi. तो यदि आप सन्यासी रहना चाहते हैं तो तुरंत ही अपने धनुष बाण का त्याग करें. Or if you want to be a kshatriya, immediately give up your saffron robes. और यदि आप एक क्षत्रिय के रूप में रहना चाहते हैं तो तुरंत अपने भगवा रंग के कपड़ों का. And if you want to keep both of them, then fight with me and show your valor. और यदि आप दोनों रखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए और अपनी शक्ति को दिखाइए. So this sannyasi said, I will fight with you and I will show my valor and defeat you. तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो आपके साथ लड़ाई करूंगा और आपको दिखा दूंगा. And they fought for so many days, and Prahlad was not able to defeat the sannyasi. और वो बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको परास्त नहीं कर पाए. So whole day they would fight, and Prahlad they will take rest together, and next day again they would fight. This is something very special. पूरे दिन वो लोग युद्ध करते थे, फिर रात को
साथ में विश्राम करते थे और अगले दिन सुबह उठकर फिर से युद्ध करते थे. Something which Russia and Ukraine, they cannot even imagine. ये कुछ ऐसा है जो रशिया और यूक्रेन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते. So then one day in the morning, Prahlad was doing his Brahma Muhurt chanting and worshipping of Vishnu. तो एक दिन प्रहलाद महाराज सुबह उठकर भगवान विष्णु के का ध्यान कर रहे थे. And he offered a special garland which he prepared himself to Vishnu. और उन्होंने जो एक हार था, माला थी, वो भगवान को अर्पित की जो उन्होंने स्वयं बनाई. And he completed his chanting and all his morning sadhana and he got up to fight with the sannyasi. तो उन्होंने अपना जप समाप्त किया और उनकी जो सुबह की साधना थी समाप्त की और फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गए. This shows that all devotees should chant their rounds and go to the work. तो ये दिखाता है कि Example सारे of Prahlad. सुबह अपना जो माला है समाप्त करनी चाहिए और तब ऑफिस जाना चाहिए. And Prahlad, when he went to fight, he saw the sannyasi wearing the same garland as his deity, which he gave to his deity. और जब वो युद्ध करने पहुंचे तो देखा कि वो जो सन्यासी थे वो वही माला पहने हुए थे जो उन्होंने अपने भगवान को अर्पित की थी. Prahlad became so angry. This is ridiculous. First of all, you are sannyasi and wearing bow and arrow, and now you have taken the garland of my Lord and you are proclaiming yourself as Lord. उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है. पहली बात तो आप सन्यासी होकर धनुष बाण लिए हुए हैं और दूसरी बात जब मैंने भगवान को जो अपने अर्च विग्रह को जो अर्पित की माला वो आपने स्वयं पहन ली. What Prahlad will say when he sees a sannyasi with iPhone, I don't know what he will say. और यदि प्रहलाद महाराज किसी सन्यासी को आईफोन के साथ देखेंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे. If Prahlad Maharaj attacks me with bow and arrow, I'll just surrender my iPhone. I will not fight. यदि प्रहलाद महाराज मुझसे युद्ध करते हैं तो मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा. I'm happy that I didn't become a sannyasi in Satyuga. I became a sannyasi in Kali Yuga. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कलयुग में सन्यासी बना, सतयुग में सन्यासी नहीं बना. So Prahlad Maharaj said angrily at the sannyasi, and immediately when Prahlad was angry, he was trying to put his arrows. Immediately the sannyasi transformed into Narada and Rishi. और प्रहलाद महाराज बहुत क्रोधित हो गए और जैसे ही आक्रमण करने वाले थे तो तुरंत ही ये सन्यासी नारायण ऋषि के रूप में. And immediately Prahlad understood his mistake and he paid dandavat obeisances to Narada and Rishi and prayed and said, I could not recognize you, O my Lord. And he was crying and the Lord put his hand on Prahlad's head. और तुरंत ही प्रहलाद महाराज ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया और बहुत दुखी हुए. तब भगवान ने उनके सर पर हाथ रख दिया. And then Prahlad said to Narayan, O Lord, I am a Kshatriya and Kshatriya should keep his vow. And if he cannot keep his vow, then he should be dead. He should commit suicide. उन्होंने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और यदि क्षत्रिय अपने प्रतिज्ञा को नहीं पालन कर पाता है तो उसको प्राण त्याग देनी चाहिए. And I said that I will defeat you. But I didn't defeat you. और मैंने कहा था कि मैं आपको परास्त कर दूंगा लेकिन मैं आपको परास्त नहीं कर पाया. Then I don't think as a Kshatriya I should leave. तो मुझे नहीं लगता एक क्षत्रिय के रूप में फिर मुझे जीवित रहना चाहिए. And the Lord folded his hands and said, O Prahlad, you have always defeated me. You don't have to defeat me again and again. और भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुमने मुझे बार-बार परास्त किया है, तुम्हें मुझे फिर से परास्त करने की कोई जरूरत नहीं. You have defeated me with your purity of devotion. और आपने अपनी भक्ति की शुद्धता से, पवित्रता से मुझे परास्त किया. And Prahlad Maharaj said, O Narada, I was such a ridiculous, atrocious and foolish-minded devotee, so-called devotee, that I could not recognize my Lord who came in the form of a sannyasi.
प्रहलाद महाराज ने कहा, नारद मुनि, आप देखिए कि मैं इतना मूर्ख था और कि मैं अपने भगवान को नहीं पहचान पाया जब वो सन्यासी के And you said that my Lord Vamandev is staying at Sutaloka. If I could take darshan of Vamandev in Sutaloka, why I went to Badrika Ashram to take darshan of my Lord? Vamandev stays and he never gives darshan. और आप कह रहे हैं कि वामन देव मेरे द्वार के बाहर खड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो मैं तो बद्रिकाश्रम जाके नरनारायण ऋषि के दर्शन करने के लिए क्यों जाता? वामन देव कभी भी मुझे दर्शन नहीं देते हैं। Vaman Dev gave darshan to Ravana. वामन देव ने रावण को दर्शन दिया। When Ravana had come to Sutaloka, Vaman Dev kicked him and gave his darshan. तो जब रावण सुतलोक में आया था तो वामन देव ने रावण को दर्शन दिए थे। Vaman Dev gave darshan to Durvasa when he came to take his help. और जब दुर्वासा आए थे उनकी सहायता मांगने के लिए सुतलोक, तब वामन देव ने उनको दर्शन दिए थे। I have not got darshan of Vaman Dev. I am not a devotee of Vishnu. I am simply a fallen soul. If you want to know who is a devotee of the Lord, he is actually Hanuman. और प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ। यदि आप भगवान के एक सच्चे भक्त के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के पास जाइए। I have not done any active service to Lord. मैंने भगवान के लिए कोई भी सेवा नहीं की है। Just consider the glories of Hanuman. तो केवल हनुमान जी के गुणगान को सुनिए। How great he was. He gave so much of happiness to the Lord by his service. वो कितने महान हैं और उन्होंने भगवान को अपनी सेवा के माध्यम से कितना सुख दिया। What service I have done to Vishnu? I have only prayed to him to relieve my distress. और मैंने विष्णु को क्या सेवा की है? मैंने केवल मेरे कष्ट को मिटाने के लिए उनसे प्रार्थना की। See, Prahlad Maharaj is a pure devotee. He is not praying Vishnu for distress, but we need to understand the principle that Prahlad Maharaj is speaking. तो प्रहलाद महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान से कष्ट मिटाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो एक सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं। And the principle is the purity of devotion is not in calling out the Lord for relieving our distress. The purity of devotion is engaging in the service of the Lord and relieving his distress. तो भक्ति की शुद्धता या पवित्रता उसमें नहीं है कि हम भगवान से अपने कष्ट को मिटाने के लिए प्रार्थना करें। भक्ति की पवित्रता उसमें है जब हम भगवान से उनके कष्ट को मिटाने के लिए प्रार्थना करें। I don't know, what did you say? This was okay, whatever it is. Prahlad said कि I prayed to the Lord to relieve my distress, but Hanuman, you see, he prayed to the Lord to give him empowerment to relieve his distress, because Lord was so much in distress in separation of Mother Sita. तो मैंने भगवान से अपने कष्ट को मिटाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनको शक्ति दें जिससे वो भगवान के कष्ट को मिटा सकें जो उनको सीता से वियोग के कारण। Of all the monkeys and of all the devotees, it was Hanuman, because he prayed. It was his devotion that he was successful in finding Mother Sita. तो सारे भक्तों में, सारे वानरों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ थे। वही एक थे जिन्होंने भगवान के कष्ट को मिटाया। We are so obsessed in begging to the Lord that, oh Lord, please reduce my distress, please make me happy, please make me happy, please make me happy. But Hanuman, he forego all his happiness, he forego all his pleasure and everything to reduce and relieve the unhappiness and distress of Lord Ramachandra. तो हम अपने कष्ट से इतने अभिभूत
रहते हैं कि हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान हमारे कष्ट को मिटा दीजिए, हमारे कष्ट को मिटा दीजिए। लेकिन हनुमान जी को देखिए कि उन्होंने भगवान के कष्ट को मिटाने के लिए उनसे प्रार्थना की, शक्ति मांगी। He was a monk and a celibate. He scrutinized the entire palaces of Ravana, where all the ladies, half naked, they were lying, finding out where is his mother Sita. हनुमान जी तो एक ब्रह्मचारी हैं और माता सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका में रावण के विभिन्न महलों में जाकर ढूंढा, जहां पर अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां थी, और माता सीता का पता लगाने के लिए उन्होंने ये सब किया। He put his life at so much of risk that his entire tail was burnt because of going and finding Mother Sita in Lanka. और उन्होंने अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाल दिया कि उनकी पूंछ को ही जला देने की योजना बनाई गई थी। And when he came back with the message of Mother Sita, my Lord embraced him and he actually relieved my Lord of his distress. He is the greatest devotee of Lord Vishnu. और जब वो माता सीता का संदेश लेकर वापस आए तो भगवान ने उनको आलिंगन करके उनको आलिंगन किया और उन्हें कहा कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। And we see Srila Prabhupada acting like Hanuman. और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हनुमान जी की तरह व्यवहार किया है। Hanuman crossed the ocean and Srila Prabhupada crossed the ocean. तो हनुमान जी भी समुद्र पार करके गए और प्रभुपाद जी भी समुद्र पार करके गए। Hanuman ji jumped off and there were so many obstacles, Mainak and Sursha and all those, and Srila Prabhupada took cargo ship and there was so much of obstacles like heart attack and seasickness. तो हनुमान जी पहाड़ से कूद के गए और उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे मैनाक, सुषेण इत्यादि। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कार्गो के माध्यम से गए और वहां पर उनको भी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा। Hanuman ji met so many Rakshasas in Lanka and Prabhupada had to encounter such hippies and they were half naked, stoned with drugs and doing all nonsense which cannot be spoken in Bhagavatam class. और प्रभुपाद जब वहां पहुंचे तो वहां हनुमान जी को बहुत सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्हें हिप्पियों से मिलना पड़ा जो हमेशा ड्रग्स लिए रहते थे, अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, और प्रभुपाद उनसे व्यवहार करते, उनसे बात करते। Just like Hanuman, Prabhupada relieved the distress of Lord and made his mission available, his message available to the Western world. ठीक हनुमान जी की तरह प्रभुपाद ने भी भगवान के कष्ट को दूर किया और उनका जो मिशन है, भगवान का मिशन है, उसको उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए भी उपलब्ध करा दिया। And Prahlad said, you see the character of Hanuman, how much he served Vibhishan. और प्रहलाद ने कहा कि आप हनुमान जी के चरित्र को देखिए कि कितना उन्होंने विभीषण की सेवा की। And it was his service that saved Lakshman ji because he brought Vishalya Karani. और ये उनकी सेवा का परिणाम था कि लक्ष्मण जी की रक्षा हो सकी जब वो लेकर आए। Oh Narada, I just can't. I can go on and on and on and on, speak about Hanuman. You go and take his darshan because he lives in this universe. तो प्रहलाद ने कहा कि मैं हनुमान जी का गुणगान करता रह सकता हूँ, लेकिन आप तुरंत जाइए क्योंकि वो इस संसार में ही रहते हैं। He stays in Kim Purusha Loka. You go immediately and meet Hanuman. और वो किम पुरुष वर्ष में लोक में रहते हैं, आप वहां जाइए और तुरंत उनके दर्शन। Narad Muni jumped off and said, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman, and he came to Kim Purusha Loka.
और नारद मुनि तुरंत ही उछले कूदे और उन्होंने कहा जय हनुमान जय श्री राम और किम पुरुषलोक में And immediately when Narad Muni reached Kim Purusaloka, Hanumanji was chanting Lord Ram's name and hearing Ramayana with great attention, and Narad Muni was jumping in the air, dancing in the air, Jai Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, like that. और नारद मुनि वहां पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी उस समय भगवान राम का नाम का जप कर रहे थे और रामायण सुन रहे थे और नारद मुनि वहां जाकर उछलने लगे जय श्री राम. And as soon as Hanuman looked up and he saw Narada chanting Jai Shri Ram, he also jumped off and he caught Hanuman's neck like this. और जैसे ही हनुमान जी ने देखा वो जय श्री राम बोल रहे थे तो हनुमान जी भी उठे और उन्होंने And he also picked up the hand of Narada and both of them started dancing, chanting Jai Shri Ram. और दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वो तुरंत नृत्य करने लगे जय श्री राम बोलते. This is how brahmacharis should have nice relationships. Both are brahmacharis. तो दोनों ब्रह्मचारी हैं और इसी प्रकार से ब्रह्मचारियों को आपस में एक मधुर संबंध रखना चाहिए. They started dancing and dancing and dancing, and while they were dancing and Narad Muni was telling Jai Shri Ram and Hanuman was telling, Narad Muni said, Jai Hanuman, you are the greatest devotee of Lord, you are the greatest devotee of the Lord. और इस प्रकार से वो नृत्य कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे और उस समय तुरंत ही नारद मुनि ने कहा कि जय हनुमान, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं. When Hanumanji heard Jai Hanuman, he put his both hands in the mouth of Narada and brought him down and made him sit. और जैसे ही उन्होंने जय हनुमान कहा तो हनुमान जी ने उनका मुंह पकड़ लिया, उनको बिठा दिया नीचे. Narada, who said I am a great devotee of the Lord? I am the most mischievous, notorious and most uncivilized monkey. और उन्होंने कहा कि नारद, ये किसने कह दिया कि मैं बहुत महान भक्त हूँ? मैं तो बहुत ही शैतान हूँ और मेरे अंदर कोई सभ्यता नहीं है, असभ्य भक्त. And because I am so uncivilized, that is why my Lord didn't took me when he went to his spiritual world and took all the Ayodhyavasis, but he didn't took me. और क्योंकि मैं इतना असभ्य हूँ, इसीलिए भगवान जब अपने धाम गए सारे अयोध्यावासियों को साथ लेकर, तो उन्होंने मुझे ले जाना. And I am suffering here in his separation. और मैं यहाँ उनसे वियोग में यहाँ पर कष्ट उठा रहा हूँ. You said that I am serving the Lord. आप कह रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ. But Lord gave me so much of power. I was in good health. I was having all powers, everything, and I served the Lord. लेकिन भगवान ने मुझे सारी शक्ति दी और उन्होंने मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं भगवान की सेवा कर सका. If you want to know the quality of a pure devotee of the Lord, you understand that he serves the Lord in all circumstances. यदि आप एक भगवान के शुद्ध भक्त के गुण समझना चाहते हैं, तो आप देखिए कि वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की सेवा करता है. Right now, our same Lord is performing his pastimes as Krishna in Dwarka. और अभी इस समय भगवान, हमारे जो भगवान है, वो द्वारका में कृष्ण के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं. And don't you know Narada? He never stays in Dwarka. और आपको पता है नारद जी कि वो कभी द्वारका में नहीं रहते हैं. He stays always in Hastinapur with his devotees Pandavas. और वो हमेशा हस्तिनापुर में ही रहते हैं अपने भक्त पांडवों के साथ. How much troubles, how much struggles, how many challenges these Pandavas went through. इतने कष्ट उठाए, कितनी बाधाएं आई इन पांडवों के जीवन में. If any one of us would have gone through all these things, we have lost all our faith on Krishna, thinking that Krishna is the most cruel-hearted person we have ever met.
यदि हम में से किसी के जीवन में ऐसा हुआ होता तो हमारी श्रद्धा पूरी तरह समाप्त हो गई होती और हम सोचते कि भगवान ने हमें कुछ रक्षा नहीं। I had everything in my life. I got all empowerment, all everything, and I did the service. Yudhishthir, Arjuna, they had nothing. They went through so much struggles, but they never left the lotus feet of Krishna. तो मेरे पास सारी शक्ति थी, क्षमता थी और मैंने भगवान की सेवा की, लेकिन युधिष्ठिर और पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा का कभी त्याग। You said that I am great because I am serving the Lord. Pandavas are great because they are serving in all circumstances. आप कह रहे हैं कि मैं महान हूं क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, लेकिन पांडव महान है क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की सेवा कर रहे हैं। And it is because of this attitude that Lord becomes completely like a purchased servant at their place. और यही स्वभाव है जिसके कारण भगवान उनके सामने एक Oh Narada, I don't know what transcendental herb or mantra or some medicine or some tantric chant these Pandavas, they know that the Lord just can't leave them. और नारद मुनि, मुझे नहीं पता कि कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी दवा ऐसी क्या है जो उन्होंने खिलाई कि भगवान उनको छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। If I would know that mantra, then my Lord Ramachandra would have never left me. और यदि ऐसा मंत्र कोई मुझे पता होता तो मेरे भगवान राम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए होते। And just see, the Lord gave his own sister as make her as wife of his friend Arjuna. और देखिए कि भगवान ने अपनी स्वयं की बहन को अर्जुन को दे दिया विवाह के लिए। The Lord is their messenger. भगवान उनके दूत हैं। The Lord is their charioteer. और भगवान उनके सारथी हैं। The Lord is their constant companion. और भगवान उनके निरंतर साथी हैं। What more I will tell, O Narada? You just go and witness the devotion of the Pandavas with your eyes. और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ नारद, आप सो जाइए और स्वयं दर्शन कीजिए। And Narad Muni, when he heard this, he said, Jai Pandavas, Jai Yudhishthir, and said, let us both go to Dwarka and witness the Lord and witness the devotion of the Pandavas. और नारद मुनि ने कहा, जय पांडव, जय युधिष्ठिर, चलिए हम दोनों चलते हैं और पांडवों के दर्शन करते हैं। And then Hanuman said to Narada, O Narada, I will not go with you. और हनुमान जी ने कहा कि वो नारद, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। I am a monkey. मैं एक वानर हूँ। I am uncivilized. और मैं असभ्य हूँ। And my Lord Krishna is performing certain pastimes in Dwarka, in Vrindavan right now, which is very, very bewildering. और इस समय भगवान द्वारका में और वृंदावन में ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जो बहुत ही परेशान कर सकती है। He said he will fight a war, not fight a war, and he fought a war. उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग लिया। He did so many activities which are completely bewildering for any ordinary person. और उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही अचंभित करते हैं। Your own father, he is so intelligent, he is the most intelligent person in this creation. He got bewildered. और आपके स्वयं के पिता जो कि सबसे विद्वान व्यक्ति हैं इस संसार के, वो भी what to speak of me as a foolish monkey? If I go there and witness these pastimes of Krishna, I will certainly get bewildered. और मेरी क्या बात करें, मैं तो एक मानव हूँ और अगर मैं ये सब लीलाएं देखूंगा तो निश्चित रूप से मैं समझ नहीं पाऊंगा। I am happy with my Lord Raghunath. तो मैं अपने भगवान रघुनाथ के साथ प्रसन्न हूँ। My Lord Raghunath never breaks his vow. और मेरे जो भगवान रघुनाथ हैं वो स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते। He knows that I will get bewildered if he has lot of wives.
That is why he has ekapatni vrata. इसीलिए वो एक पत्नी व्रत के रूप में He knows that I will get bewildered if he glorifies himself as the Supreme Personality of Godhead and does whatever he wants to do independently. और वो जानते हैं कि यदि मैं उनको एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखूंगा जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं. I want to see my Lord as Raghunath, as Maryada Purushottam, so that my intelligence does not get bewildered and offend my Lord. तो मैं उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीला करते हैं. If my Lord calls me Raghunath, and if Lord Krishna gives me his darshan as Raghunath, then I will go. यदि मेरे भगवान रघुनाथ के रूप में बुलाते हैं और कृष्ण स्वयं रघुनाथ के रूप में दर्शन देते हैं, तब मैं जाऊंगा. I was fortunate to do some service to my Lord when he called me in Kurukshetra war and made me sit on the chariot of his dear friend Arjuna. और भगवान ने मुझे बुलाया था और उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन के रथ पर बैठने के लिए मुझसे कहा था. Oh Narada, go and meet the Pandavas. They are the greatest devotee of the Lord. तो ओ नारद मुनि, आप जाइए और पांडवों से मिलिए, वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं. So this is the unalloyed devotion of Hanuman. तो ये भगवान हनुमान जी की अमिश शुद्ध भक्ति है. Hanuman knows that Krishna is his Lord, but he is so devoted and loyal to Raghunath. तो हनुमान जी को पता है कि कृष्ण उनके भगवान ही है, लेकिन वो रघुनाथ जी के प्रति पूरी तरह समर्पित है. I will tell you little glories of Hanuman because Ram Navami is coming just some 10 days after. Lord Krishna in Dwarka he saw that some of the devotees of Dwarka, they are becoming little arrogant and pride. तो भगवान कृष्ण ने देखा कि जो द्वारका के उनके भक्त हैं वो थोड़े बहुत अहंकारी हो रहे थे. Especially Garuda was becoming little proud. और विशेष रूप से गरुड़ देव अहंकारी हो गए. And Krishna wanted to curb the pride of Garuda. और भगवान कृष्ण गरुड़ के इस अहंकार को दबाना चाहते. And Krishna said to Garuda, "Oh Garuda, you are my carrier. In Treta Yuga, Hanuman also served as my carrier. I want to meet Hanuman and just talk with him because I am remembering all my days with Hanuman in Treta Yuga." तो भगवान ने कहा कि गरुड़ देव, आप जो हैं मुझे मेरे वाहन हैं, तो आप मुझे ले जाते हैं और त्रेता युग में हनुमान जी मुझे ले जाते थे, तो आज मुझे उनकी बहुत सारी लीलाएं उनके साथ याद आ रही हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. Go and tell Hanuman and bring him here. Tell him that Krishna is calling him to Dwarka. तो आप जाइए और उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि कृष्ण उनको बुला रहे हैं द्वारका. And then Garuda flew immediately and came to Kim Purushaloka to meet Hanuman. और गरुड़ तुरंत ही उड़ते हुए गए और किम पुरुषलोक में आए और हनुमान जी को बताया. And Garud said, "You are so fortunate, the Lord of Dwarka, Krishna, Dwarkanath, he is calling you, Hanuman, please come." उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और द्वारकानाथ आपको अपने पास बुला रहे हैं. Hanuman said, "I only go if my Lord of Raghunath calls me. I don't go if Dwarkanath calls me." तो हनुमान जी ने कहा कि मैं द्वारकानाथ के बुलाने पे कहीं नहीं जाता, मैं केवल रघुनाथ के बुलाने पे जाता हूँ. Garuda felt offended. तो गरुड़ जी को अपमान महसूस हुआ. "You monkey, you reject my order?" उन्होंने कहा, तुम वानर मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो. Don't you understand that the same Lord Raghunath who appeared in Treta Yuga has appeared as Dwarkanath, and you consider yourself as great devotee of the Lord? क्या तुम्हें नहीं पता इस जो रघुनाथ हैं वो स्वयं ही जो त्रेता युग में रघुनाथ के रूप में आए
और वही द्वापर युग में द्वारकानाथ के रूप में आए हैं. But because you are not able to recognize him, but I am able to recognize him. I know that the same Raghunath is Dwarkanath, and I will take you to my Lord, no matter whether you want to go or not, because I have got the instruction. तो आप तो उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन मैं पहचानता हूँ, और मुझे क्योंकि आदेश हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से आपको यहाँ से लेके जाऊंगा. And Hanuman just started chanting Jai Shri Ram and just sat down. This is Brahmachari. He doesn't get disturbed. और हनुमान जी बस बैठ गए और बोलने लगे जय जय श्री राम का जप करने लगे. ऐसा एक ब्रह्मचारी होता है जो कभी परेशान नहीं होता है. Chanting Hanuman, and then Garud thought that he will put the tail of Hanuman and he will take it like this and then he will fly. और गरुड़ जी ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ पकड़ के उनको उठा के ले जाएंगे, उड़ा के. And Garud ji touched the tail of Hanuman. और गरुड़ जी ने उनकी पूंछ को छुआ. And Hanuman ji just did like this with his tail, and Garud ji from Kim Purusha Loka, he was thrown directly to Dwarka. हनुमान जी ने अपनी पूंछ को हिला के हल्के से उनको मारा और गरुड़ जी उड़ते हुए. Just in a flash of time, Garud ji flies in the speed of mind. और गरुड़ जी मन के वेग से उड़ते. In a flash of time, he could not understand, and he found himself in Dwarka at the feet of Krishna and said, "Where is Hanuman?" और उससे भी कम समय में वो सीधे द्वारका में जाके गिरे और देखने लगे कि हनुमान कहाँ है. And Krishna said, "Where is Hanuman?" भगवान कृष्ण ने कहा कि हनुमान कहाँ है. And Garud ji understood that he is so insignificant in front of Hanuman. और गरुड़ जी को समझ में आ गया कि हनुमान जी के सामने वो कितने तुच्छ हैं. And then Krishna said, "Garuda, you didn't bring Hanuman." कृष्ण ने कहा आप हनुमान जी को लेके नहीं आए गरुड़ जी. Garud ji said, "Only you can bring him Hanuman. You can bring Hanuman to Dwarka. I am completely unqualified." और गरुड़ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि केवल आप ही उनको लेके आ सकते हैं, मैं तो अयोग्य हूँ. So Krishna said to Garud ji, "You go again to Hanuman and said, Lord Raghunath is calling you." और कृष्ण ने कहा कि आप फिर से जाइए उनके पास, उनको बोलिए कि. And again Garuda came to Kim Purusha Loka. फिर से वो किम पुरुष लोक में गए. And he said, "Lord Raghunath is calling you, Hanuman." उन्होंने कहा भगवान रघुनाथ आपको बुला रहे हैं. And here Krishna in Dwarka, he said all his other maid and maid servants and all the queens to decorate himself as Raghunath, as king with bow and arrow and like Raghunath. और यहाँ भगवान ने सारे द्वारका के अपने जो भक्त उनसे कहा और उन्होंने राम का रूप धारण किया, एक धनुष बाण लेकर राजा के रूप. And then Krishna called Balaram ji and made him Lakshman. और बलराम जी को बुला के लाए और उनको लक्ष्मण का रूप में रखा. And Krishna was at that time in the palace of Satyabhama. और इस समय कृष्ण सत्यभामा के महल में थे. He wanted to curb the pride of Satyabhama also, along with the pride of Garuda. और गरुड़ जी के साथ साथ सत्यभामा के अहंकार को भी दूर करना चाहते थे. So Krishna made all different maid servants decorate Satyabhama as Sita. और उन्होंने सारी सेविकाओं से कह के सत्यभामा को सीता के रूप में उन्होंने. And it was not fitting at all. It was not fitting at all. It was not at all fitting. और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा था. And Satyabhama was not looking like Sita, and she was not able to act like Sita. She was not able to speak like Sita. This is Satyabhama. और सत्यभामा बिल्कुल भी सीता जैसी नहीं दिख रही थी, उसकी तरह व्यवहार नहीं कर पा रही थी, उसकी तरह बोल भी नहीं पा रही. Krishna said, "Call Rukmini." और कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को बुला के लाओ. And then Rukmini was decorated as Sita. और फिर रुक्मिणी को सीता के रूप में. And all the Dwarkavasis confirmed, and everyone confirmed, and Rukmini was able to act like Sita and give darshan like Sita.
और सारे द्वारकावासियों ने ये बताया कि रुक्मिणी बिल्कुल सीता की तरह व्यवहार कर पा रही है, तो उनको सीता And then Garuda and Hanuman came and saw Ram Darbar in Dwarka with Rukmini as Sita Devi. गरुड़ और हनुमान जी आए, उन्होंने द्वारका में राम दरबार देखा और रुक्मिणी सीता जी थी और बलराम जी लक्ष्मण जी बने हुए. In this way, Hanuman's devotion is fully loyal, dedicated to Raghunath. तो इस प्रकार से हनुमान जी की जो भक्ति है वो पूरी तरीके से समर्पित भक्ति है. And in this way, Lord in Dwarka curbed the pride of Satyabhama and Garudev and many Dwarkavasis. और इस प्रकार से भगवान ने गरुड़देव, सत्यभामा और द्वारकावासियों के अहंकार को दूर किया. And Narad Muni is going to reach Hastinapur, and what will happen in Hastinapur we will hear in the next Ekadasi. तो अगली एकादशी में हम देखेंगे कि जब नारद मुनि हस्तिनापुर पहुंचे तो क्या क्या हुआ. So all of you meditate on Hastinapur and the glories of Pandavas till next Ekadasi. तो जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक आप हस्तिनापुर और पांडव के गुणगान के बारे में हम ध्यान करें. जय युधिष्ठिर महाराज. जय युधिष्ठिर महाराज. जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री बृहद भागवतामृत की, श्री श्री नारद मुनि की, श्रील प्रभुपाद की. जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीता महारानी की, श्री लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. एकादशी की जय. हरे कृष्णा.